जय हिंद दोस्तों। भाई आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ गुफ्तगू में हूँगा जिनको मैं अपने बड़े भाई की तरह रिगार्ड करता हूँ। भाई वी गो बैक जनरेशंस एंड जब मेरे चाचा जान नसीरुद्दीन शाह साहब जब वो एनएसडी से पास आउट होके वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट एफटीआई गए थे, तो ही वेंट देयर विद अ वेरी कॉन्ट्रसेंडिंग एटीट्यूड अपेरेंटली दैट अरे भाई मैं एनएसडी से पढ़ के आया हूँ नेशनल स्कूल ड्रामा में, यहाँ पे कौन क्या सिखाएगा मेरे को, देखते हैं भाई। सो देयर ही हैपेंड टू, उनकी ये क्लास थी, वो रोशन तनेजा साहब के साथ क्लास थी, where he told him, okay, Nasir, you go out of the classroom and you come inside. So he went out and he came inside and he tripped to make it interesting for the entire class. He said, no, 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 don't trip. Come back normally. Just enter. Simple. कुछ नहीं करना है, बस आपको enter ही करना है. And then he realized that यहाँ पे Professor Roshan Taneja, he is a master craftsman of his trade. He knows how to explain. इनको acting के बारे में पता है, और वहां से वो उनने उनको गुरु माना and ट्रेनिंग हुई. And the rest, as they say, is history. दुनिया उनको जानती है नसीरुद्दीन शाह के नाम से, पद्मश्री, पद्म भूषण, so many national award. Shabana Azmi said on Mr. Roshan Taneja's demise that only man whose feet she touched was Roshan Taneja, who has trained several great actors, institutions of the country. In fact, oh my goodness, I mean, he was a big asset, a big boon to FTI Pune. And after that, he branched out to Mumbai. He set up his own acting school, and which my brother over here, Rohit Bhai, his son, he has a दो बेटे हैं, रोहित भाई और राहुल भाई. Rohit Bhai is taking the what is it, the baton forward, and he's doing great work in training a lot of great people. And you name the greatest actor, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा ना, तो कितने कितने एक्टरों को ट्रेन किया, कौन कौन, तो बस खत्म नहीं होगी. The whole time will go in just giving out the list of names. तो आप समझ सकते हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार हैं देश के, they have been trained by Roshan Taneja साहब, and now the young generation is being trained by the Roshan Taneja School of Acting. And I remember I had the honor of meeting Roshan Taneja Saab at FTI Pune. And the same evening, same night, Rohit Bhai was very kind enough to have given me a lift from Pune to Mumbai back home. So Rohit Bhai, Jai Hind, and thank you very much for spending time for us, sir. Major, I'm honored, and it's a pleasure to be with you live today. It's so wonderful to see you again. Your positive energy is always so infectious, and I can never forget the couple of hours I spent with you in the drive back from Pune to Bombay. That energy still lasts with me, so you can imagine the kind of energy you exude. And thank you so much for the wonderful words and feelings that you have expressed before you put me on. I'm much obliged. Yeah. Thank you very much, Rohit Bhai. Rohit Bhai, सबसे पहले हमको ये बताइए, how was it growing up with such a towering personality in the house? Roshan Taneja Saab ke bhai, and two brats around the house, two naughty brats, I would say. How was it having such a learned man, such a great institution as your father, sir? Actually, I never knew his his value. जैसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरे लिए तो वही था. मैं जब तक the interesting thing what happened was in 2009 when my father completed 45 years of his teaching career. There was a gathering, get together which was organized, and I took on the onus of going and shooting video bites and testimonials of his ex students who are now major stars. And that's when I it hit me that whose company I have been actually sharing space with. In Before that, believe me, I mean, I always knew that the number of students he had trained and the kind of success they had achieved and how they held him in esteem, all of that. But it never really, hit me, or it was like, yeah, theek hai, what's the big deal, you know? But it's in those few days. It took me, I think, around 15 days to go around shooting with all of them, as whoever was available. And that's when it hit me that the kind of contribution which all of these people have
acknowledged as far as their careers go, and as far as their acting knowledge and skills go. That was the turning point for me to have understood what the magnanimity and what the enormity of my father's work was. Wow. And 2009 is like not very, it's very, very recent. It's not very old. Abhi, matlab, Yeah, just about less than a decade and a half, 14 years yeah, back only. So you mean all these years, I mean, it was, but what you're saying is right. You know, Aksar, my own son, he takes me for granted. When I teach him something, ah, बाबा तो ऐसे ही बोल रहे हैं. और वहीं पे ही दूर दूर के स्कूल्स बुलाएंगे, मोटिवेशनल टॉक दो हमको, ये करो वो करो, ये हम वहाँ पे. जी, जी, I tried giving some gyan to my own son. He shrugs it off. Ah, guys, yeah, ऐसे ही बोल रहे हैं. So I can जी. well imagine, I can well understand that. So tell me, Rohit bhai, you grew up, आपका जो माहौल था घर के अंदर, you know, you the best of actors, the superstars have been trained by your father, and वो तो आम माहौल था आना जाना. So कभी दिल में कहीं पे ख्वाहिश थी बचपन में कि आपको बड़े होके एक्टर बनना है? वेल, शुरुआत में तो थी, ये तो कहूँगा नहीं कि नहीं थी, झूठ होगा। बट जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होता गया और समझता गया कुछ चीज़ों को, तो मुझे ये तो इतनी तो समझ में आ गई थी बात कि मैं अगर कोशिश भी करूँगा तो मैं बहुत बुरा एक्टर बनूँगा। और और मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे फादर की जो इतनी अच्छी रेपुटेशन बन चुकी थी, इतने एक्टर्स को निकालने की, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई टुक द इजी वे आउट. आई डिडंट वांट टू टेक द प्रेशर. I felt overwhelmed by the expectations even before they started, and I felt that I would actually, people would probably not look at my father with so much of respect if they found that, look at what his son is doing, what a bad actor he is. So I took the easy way out, and I chose a career behind the camera, and that's how it went about. I mean, I did, of course, nurture ambitions, but those were thwarted. बहुत जल्दी जिंदगी में, बहुत जल्दी मैंने उसको उनका गला घोट दिया था. जब मैं बॉम्बे आया था ना, एंड आई हैड कम टू फोर बंगलोज फॉर एन ऑडिशन, एंड जब मैं गुजर रहा था वहां से, एंड मैंने देखा कि Roshan Taneja School of Acting, I was like, "Arey, wow!" Something which I was really in awe of, a name which I had grown up being in awe of was here. And you know, मेरे दिल में एक ख्वाहिश जगी कि मैं एक दिन आऊंगा यहाँ पे, and I would just come and say hello to sir and to you and to everyone over there. But कभी ऐसा मौका आया नहीं. Then one fine day, I did come actually when it was quite at night, and only your caretaker was there that time. And I saw the entrance, I saw the steps, I saw the notice board, and I was like so much in awe. And वहीं वहीं के ही जरासम इतने होते हैं, वहाँ की फिजा में ही ऐसा कुछ है कि वहीं पे ही आप एक्टिंग के कुछ ना कुछ जरासम आ ही जाते हैं. So now, so tell me one thing, Rohit bhai. So when did you get involved with the school of acting? I mean, कब आप formally इसमें you started helping your father with it, sir? जी, तो जैसे मैंने कहा कि आई चोज अ करियर बिहाइंड द कैमरा. So in 86, after I graduated, from college in Delhi, St. Stephen's, I wanted to, start working as an assistant director. And Sri Subhash Ghai Sahab, who was such a big, I mean, he's still a big name and a big director, but at that time he was at the peak of his career. And he being an ex-student of my father, I requested my father if he could put in a word for me, and he did. And Subhash ji took me under his wings as an assistant, and I worked with him for 8 years on 5 feature films. And then after that, of course, there was a little bit of stagnancy, so I diversified. I wanted to become an independent director, but the offers were not coming through. It took me a couple of years just to get the rounds going, and it didn't happen. And fortunately, at that point, this I'm talking about the early 90s, 92, when private television started in India. So I joined ZTV, which was the first private channel which launched, and I joined them as an in-house director. And I worked in television for many many years, doing lots of shows. I don't know, over 3-4 thousand hours of television programming, right up to 2009. And it's in 2000.
Around the early 2000s is when more competition in terms of other options for training actors were emerging, and that's when my father started feeling the pinch of the competition, although he never used to make it come across. But it's around 2008 2009 when I realized that my father needed my help, and that's when I put my career as a director on the back burner, and I thought that I should give back to my father what he's done for me all these years. And in 2009 I joined him primarily, initially just as in the administration to look after admissions and counsel students who wanted to know about the course and so many other things, and generally just look after things and make sure that uh, and in the back end keep the atmosphere conducive to my father's work. But I soon realized that my father is not going to be around forever, and if I needed to be of real value and help, I needed to also uh, learn, like so many others have learned under him, to be able to substantially help in the school. So even after having worked as a director, independent director, for over almost 17 to 18 years, I joined him as a rank newcomer, and I joined him, trained under him for 5 years. Wow. And I trained under him for 5 years for the simple reason because all the other students, people who have trained under him in the FTI, did a 2 year course. And of course, they went ahead and made big names for themselves. But for me, it was a double-edged sword. I didn't want to, I didn't want people to tell just because he's Taneja and he's his father's son, he's just taken over. This thing that we keep hearing about nepotism and so many other things. So that is why I chose to train under him for 5 years, so that I make myself so equipped with, the learning, that if tomorrow if I hold any kind of ambition to start guiding students, I should know all that there is to know. And that's how I started. So it was in 2009, but from 2009 to around 2012 or so, the first 3 or 4 years, I was just looking after the administration. And after that, then I involved myself. I mean, I, of course, like I said, I trained under him. Then I started, slowly started taking class, and then, say from 2000, say around 16 or so, I have been regularly taking sessions. And of course, till 2019, my father was very active till he was alive. In 2019, he sadly passed away, and then the entire, of course, onus was on me, and I have somehow managed to keep it going. I must add over here my extreme gratefulness to your uncle Sri Nasruddin Shah, who, of course, I have uh, high esteem for as an actor. But in the last couple of years, I've also got to know him more as a person. And when I've got to know him as a person, I actually worship him, because he's the one who has been a major support, and he's come and helped us in the school, uh, taken sessions whenever he can. He's always gone beyond the call of his duty, and I've never had to say, "Sir, please come." He, in fact, sends me a message saying, "I'm free on so and so dates. Would you like me to come?" So that's the kind of dedication which he and support which he has offered, and that's what's actually kept me going. He's very generous. He's very, very generous, very, very kind that way, and very, very helpful and considerate. He's always help mango to khat se. He's always ready. He's but and there are times he himself sees that नहीं I can if मैं दे सकता हूँ यहाँ पे इस time तो वो ऐसे इतने खुले दिल के इतने बड़े दिल के हैं शख्स कि he will really go out of his way to help a person when he likes someone. So, and आपने बहुत ही अच्छी बात करी, about nepotism, and people should not say that just because you were Roshan Taneja's son. I would give full credit to you, in fact, to you, to Rohit Taneja, and I would call you self-made actually. वो अलग बात है that you took on the legacy from your father, but then and आपने you kept it going. I'll not say you kept it going. You've surpassed all expectations और आपने इतना आगे ले गए हैं आप वाकई में रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग को काबिल तारीफ है. बहुत लोग सोचते हैं ऐसा that
okay, if just because one comes from a privileged background, privileged family, so he must have had it very easy. But ऐसा बिल्कुल दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है. I mean, you have no idea what everyone's journey is, what struggle they would be having. And आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है इसमें रोहित भाई. रोहित भाई ये बताइए about the faculty apart from Nasir Saab. I mean, he comes and takes classes. Because I remember when Rashid Saab came to FTI, and I remember in his autobiography also, and then one day it's there when he passed out from LSD and he joined FTI. That time Om Puri Saab could not afford to come to FTI, so he worked in Delhi for a year, saved some money, and then he joined FTI. And he was very bowled over by again Roshan Taneja Saab's classes. And after he passed out from FTI, much later on, when he was looking for work in Mumbai, he joined Roshan Taneja Saab as a teacher in his school. He would teach there. That's how he could survive. So जी. you've had the best of faculty. Could you throw some light on your faculty, Roshan, Rohit bhai? See, actually, they are, right from the beginning. If I need to, I mean, starting from Asrani ji was the first student who, of course, after having done the course, started teaching. So from Asrani ji to Danny Dengzompa to Mithun Chakrabarti to Om Puri to, you know, several others who actually all the people who uh, worked as faculty with my father went on to become big names and went on to become successful. तो काफी लोग उसके बाद ये देखने लग गए कि हाँ अगर हम टीचर बन जाते हैं सर के साथ तो हम भी बड़े एक्टर बन जाएंगे. तो ऐसे कई लोग आए थे जो इतने काबिल नहीं थे. But you're right, Major, that we've always been blessed with faculty which is so sure of the exercises that they conduct, and we've on that front I think we are on a very strong wicket because we make sure that we offer the best kind of knowledgeable faculty to the students who come to us, so that they are fully equipped with the kind of to counter the kind of competition that exists today in the industry. आज भले ही साधन बढ़ गए हों, कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कह लीजिए, कई टेलीविजन चैनल्स, तो मल्टीपल एवेन्यूज खुल गए हैं, मगर उन मल्टीपल एवेन्यूज के लिए मल्टीपल लोग भी मौजूद हैं, और उन मल्टीपल लोगों में उभर के आने के लिए आपको अपने आप को बहुत मजबूती से तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी. ये कोई जो बाहर से लोग सोचते हैं कि हाँ जी एक्टिंग बहुत ही आसान चीज़ है, मैं इतना तो बता दूं कि आई थिंक शायद अगर कोई मन लगा के डॉक्टर की पढ़ाई कर ले तो वो शायद डॉक्टर और आसानी से बन जाए, एक्टर शायद ना बन पाए. राइट. Right. जहाँ तक मेरी सोच है. Very So yes, true. you're Very right. We've had been blessed with very good faculty, and we still are. Yeah. right. Talking Yeah. about faculties, and since you worked with Subhash Ghai for many, many years, in fact, when he set up Whistling Woods International, I remember visiting Whistling Woods International in the year 2007, जब inception stage पे था, it was just coming up, just forming. So I never thought कि 10 साल के बाद 2017 में, in fact, I joined there as a visiting faculty in the actor studio, and I would love it. In fact, I would love the mall, and in fact, I learned much more than the students over there, than what I could impart on that. I could not impart much, unfortunately, but I feel that. But हमारे जो WhatsApp group है, these I love the kids. Do I love them? That love was returned. The kids would love me back, and बहुत कुछ सीखने को मिला, and it was great fun. But you're जी. right. It is something really, really amazing. It is actually magical. Now, how is it working with children, with kids? Children जब मैं बोलता हूँ मतलब children मतलब बड़े लोग भी हैं उम्र वाइज भी, with dreams in their eyes, with that twinkle in their eyes. तो अक्सर अनुमान तौर पे आपने क्या गौर किया है कि लोग बॉम्बे आते हैं, जरूरी नहीं है कि रोशन तैजा के स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, जी 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 ओवरऑल जी. an aspiring actor who comes to Mumbai, he comes with dreams in his eyes to become a star, or because he loves to act. What's been your observation overall? अभी हाल ही में तो एक्टिंग इज इन द बैक बर्नर. वो पैसा कमाने के लिए आते हैं और फेम कमाने के लिए आते हैं, तो उनसे अमूमन तौर पे मैं हर हर जने से जो भी हमारे पास आते हैं पूछता हूँ मैं कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं. तो 8 out of 10 टाइम पीपल से फेमस बनने के लिए. तो मैं कहा आजकल फेमस बनने के लिए सिर्फ एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आप
चौक में जाके किसी को थप्पड़ मार दें तो आप फेमस बन जाएंगे क्योंकि वायरल हो जाएगा, राइट? तो वो फेम, उस अलग फेम को, अगर आप फेम को देख रहे हैं, वो एक उसका बाय प्रोडक्ट है। अगर आप जब तक आप ये नहीं सोचते हैं या जब तक आप ये नहीं महसूस करते हैं कि मैं एक्टिंग के बिना और कुछ नहीं कर सकता हूँ, तब तक आपको इस इंडस्ट्री में या इस पेशे को चुनना नहीं चाहिए। ये चीज़ें आपको खुद अपने आप से पूछनी चाहिए बिफोर यू एक्चुअली कम इन। और थिएटर के अंधेरे में या अपने डिवाइस के सामने बैठ के किसी एक्टर को देखना और उनसे प्रभावित हो जाना और इंस्पायर होना, ये अच्छी बात है। मगर ये सोच लेना कि अच्छा ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं इनसे अच्छा कर लूँगा, ये थोड़ी-सी अनरियलिस्टिक सोच है। क्योंकि जब आप उस चीज़ को ब्रेक डाउन करके उसी परफ़ॉर्मेंस को, जो आपको इतनी सरल और इतनी असरदार दिख रही है, उसके पीछे जब आप जाते हैं कि उसके अंदर मेहनत कितनी लगती है और क्या-क्या आपको ध्यान में रखने की ज़रूरतें हैं, उस लेवल ऑफ परफ़ॉर्मेंस तक पहुँचने के लिए। तो तब जाके स्टूडेंट्स को वो जो जितने भी सितारे होते हैं उनके जगमगाती हुई आँखों में, वो सब निकल जाते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ जी, ये मेहनत की, यहाँ पे भी मेहनत की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ दे आर नॉट academically inclined and they don't want to do something which choose a career which has needs academics to further their careers. They think that acting is the probably the easier route, but may not be academics in terms of books, but academics in terms of emotions. It's going to take you a lifetime to be able to सारे सुर को अपने अंदर समेट लेने के लिए वो वक्त लगता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आई नो बहुत से लोग यूँ कहते हैं कि भाई मैं पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाऊंगा तो मैं एक्टर हीरो बनूंगा। द टर्म इज हीरो, द टर्म इज नॉट जी, एक्टर। यू नो आई रिमेंबर 1999 में इन पुणे इन माय कॉलेज फर्ग्यूसन कॉलेज and Said Mirza had come over there. He was for a student project of FTI. He was shooting for a short film, 11-12 मिनट की फिल्म थी वो इन फर्ग्यूसन कॉलेज। तो हम सब इनामर्ड थे, शूटिंग हो रही है कॉलेज में, और आई वेंट टू हिम एंड आई सेड सर आई आल्सो वांट टू एक्ट इन योर फिल्म। So he said, "Beta, I have already finished the casting and such things." So मैंने क्या करा? I became the पढ़ा लिखा spot boy. I would hold the reflectors, the tripod, bipod, and सबको जी, पानी जी। चाय पिलाना, that kind of stuff. And then he observed my passion for a few days and he said, "Okay, बेटा एक role है तुम्हारे लिए, करोगे?" मैं सर बिल्कुल I'll do anything to do that role. So he said, "ठीक है." The hero of the film, he would Kranti Kanade, a very dear friend of mine. He was in FTI. He was a student of alumni of Ferguson College, incidentally. Either he would be in this frame और तुमको पीछे से गुजरना है, सो वो करोगे? आई सेड सर बिल्कुल करूंगा। एंड इट वाज एक्चुअली आई टाइमिंग वाइज आई शुड हैव फिनिश्ड इट इन 3 सेकंड्स। थोड़े मैंने आई वाज अनट्रेन्ड एंड रोवाई रॉर, तो मैं फुटेज खाई, तो मैं वही 3 सेकंड के मैंने 5 सेकंड में मैं गुजरा पीछे से, और वो यूट्यूब पे है अभी भी वो फिल्म। अच्छा। एंड so, so this was 1999, imagine. And so I generally had this love for acting. But you know, Roshan Taneja Saab always is known as the master craftsman of method acting. Like जैसे कि Stanislavski का नाम लेते हैं हम, Grotowski का नाम लेते हैं, या one takes name of Meisner, उस तरीके से रोशन तनेजा साहब का नाम लिया जाता है कि रोशन तनेजा साहब सेज, उन्होंने कहा था कि ऐसे करके निभाना है। Like I'll give you, you will know what I'm talking about. I will just tell this. कि a few years back I was shooting for a film with Tigmanshu Dhulia called Yara, where I had played a Sikh gentleman. तो उसके लिए मैंने अपनी दाढ़ी और केश अपने उगाए, मैंने 2-2.5 साल पंजाबी बोलनी सीखी, ठेठ पंजाबी। Like you know, I'm from UP, so we had to speak like पौरा भी अकल ले रे, और किताबा नहीं देना कुछ, अरे वाडिया नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए है, और गुरुआ ने मुड़ के नहीं देखता। So I had to speak, I learned पंजाबी that way, और सिगरेट पीनी छोड़ दी बिल्कुल मैंने। और गुरुद्वारे में, गोल्डन टेम्पल में मैंने 1 महीना गुजारा वहां पे, फर्श पे झाड़ू पोछा बर्तन करता था मैं, फर्श पे सोया करता था। I would so people would say you are doing method acting. I said I don't know what method acting was. Frankly मुझे नहीं मालूम था कुछ, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था, but I was just preparing for myself. Then by reading books like Preparation of a Character, an Actor Prepares, Stanislavski की and Roshan Taneja की sayings सुन के, so I was just doing my bit. I read the Sri Guru Granth Sahib Ji, complete पढ़ी मैंने, the English translation, after growing my hair and my beard and everything. So, what is your take on method acting? Method acting होती क्या है? What you would have learned from your father and subsequently thereafter, sir?
What I have understood of it is that actually, although we're using the term acting, but we are not acting. We are just being. Hmm. So acting is doing, and if doing is like living, we're living. We as human beings are living. You know, so also a character needs to be living on screen. And if that character, like you rightly said, that I have seen some of your work, Major, and you are an extremely gifted actor, and so if if somebody is Sikh by birth, then he would have gone to the all the religious places. If he's had the privilege to reach the Golden Temple, so be it, very good. But he would have read the Granth Sahib. He would know the tenets of Sikhism. He would know what it is to be a Sikh. So if there's an actor who is not a Sikh, but he has to portray somebody who is that, I think it's the duty of the actor to at least understand that bit from that character's life, to be able to make it believable. So method acting, if I had to put it in a word, is to make the audience believe in what you're doing, and they would only believe in it when you feel it and when you actually do it. So that would be, I mean, I don't know how effective that would be in terms of a shorter answer. Of course, if you start dissecting it, it's volumes and volumes of uh, words which have to be put in to make it illustrated enough. But it's just doing. Absolutely, to do exactly. आपने you answered it beautifully in a very short way. Absolutely, like again, I'll just to for example, when I was doing Heather with Vishal Bhardwaj, so क्योंकि मैं फौज से आया था already, I had served in the army, so he thought कि ये इसको फौजी का role suit करेगा बंदे को, and so I didn't really have to prepare once again or reinvent the wheel कि कैसे फौजी behave करता है, वो तो inborn था ही मेरे में. So I wasn't really acting, I was doing my जो ड्यूटी हमने करी थी JNK में 2003 में, वही ड्यूटी मैं यहाँ पे करता कैमरा के आगे, बस फर्क केवल इतना ही था. और यू टॉक अबाउट बजरंगी भाईजान, उसमें भी कबीर खान गेव मी यूनिफॉर्म पार्ट कि भाई ये करना है, तो यूनिफॉर्म. एंड यू नो व्हाट रोहित भाई, वन थिंग आई नीड टू टेल यू, यू रियली मेड माय डे. This is the best compliment of my life I've got from Rohit Taneja, saying that you've seen my work and you appreciate that. Wow, you don't know, you really don't know how much that compliment really means to me. I'm super happy to hear that. So And I'm not flattering you. I mean it. I don't say things just for the sake of it. I know, I know, I know. You made my day. You made, see, मैं तो acting को ऐसे देखा है. Tell me if I'm wrong. So I basically came to Mumbai. I already had a cushy job, plum job, and after the army, I went to a premier. मेरा दाखला नहीं हुआ था NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, दो दफा, 2001 में और 2002 में. फिर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए ट्राई किया, फिल्म मेकिंग कोर्स, वहां पे भी मेरा दाखला नहीं हुआ. Then I tried for the short service commission in the army, because I thought this way that ठीक है, I'm passionate about acting. What if I do, if I was like actors like Nasir Saab, Om Puri Saab, they trained at NSD for 3 years and FTI for 2 years, 5 years formal training in acting. तो मैंने सोचा 5 साल तो शॉर्ट सर्विस कमीशन था आर्मी का. सो आर्मी विल पे मी एंड ट्रेन मी, एंड देशभक्ति की जो भावना जो हर हम सब में है, वो भी पूरी होगी. सरहदों पे मैं रक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा देश की. एंड प्लस आर्मी विल पे मी एंड ट्रेन मी इन horse riding and polo, deep water diving, mountain climbing, rock climbing, hang gliding, adventure sports, para sports, para jumping, paratrooping, you name it. सब कुछ फौज, मार्शल आर्ट, सब कुछ आपको फौज सिखाएगी. एंड देन व्हेन यू कम टू बॉम्बे आफ्टर 5 years, जो आई वाज वेरी क्लियर विद दैट विजन कि 5 साल ही करूंगा मैं, तो आई वाज वेरी टेम्प्टेड टू स्टे ऑन. बट देन craft, so I was doing theater throughout. I did, and I still do. Even the pandemic didn't stop me. Pandemic में भी मैं theater करता रहा. बड़े बड़े लोग कहते भाई वो फ्रस्ट्रेट हो गए, थिएटर नहीं कर पा रहे थे, बट मैं तो आई केप्ट डूइंग थिएटर, कभी ऑनलाइन तो कभी कहीं ना कहीं, कैसे भी. So what the point I was trying to I was going to ask you was that I came to Bombay not to become a hero or a star, but because I love the craft. I want to satisfy my creative hunger as an actor. तभी जब मैंने यारा का रोल किया, मैं दाढ़ी उगानी चूज करी और मेरी शक्ल पूरी छुप गई. All the role that I've done, I've covered my face.
On the contrary, I'm told that actors would like to look in the mirror 100 बार, बाल कैसे लग रहे हैं और कैसे दिख रहा हूँ. So which is better, looking good or performing good? Definitely not looking good. uh, Looking good, yeah, if the character requires you to be a good looker, then of course, yes, looking good. Otherwise, it's just, being truthful to what you're doing, extremely truthful to what you're doing. अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा दिखेंगे, आप अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे, राइट? इट्स सो इट्स एज सिंपल एज दैट. प्लस मैं एक और चीज़ अपने जो भी आप लोगों को अभी आपको देख रहे हैं ये भी बताना, आप एक इस चीज़ का एक जीता जागता एग्जांपल है मेजर, कि आपके चचा जान जो इतने अकम्पलिश्ड एक्टर हैं, उनके इस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाने के बावजूद भी आपको फिर भी अपना एक खुद का स्ट्रगल करना पड़ा, और ऐसा नहीं है कि थिंग्स वर गिवन टू यू ऑन अ प्लेटर. सो जो ये लोग सोचते हैं कि बाहर से सोचते हैं कि अच्छा हमारे इस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए आपको कोई चाचे मामे या रिश्तेदार की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत गलत सोचते हैं. और मुझे काफ़ी हद तक मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इसका थोड़ा सा जिम्मेवार ठहराऊंगा, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों को बिजी रखने के लिए या उनको एंटरटेन करने के लिए ऐसी बहुत मनगढ़ंत कहानियां टेलीविजन पे दिखाते रहे रात को, जिससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, जो 100% गलत है. और Right. है ना, आई थिंक बहुत लोगों का, बहुत अच्छे एक्टर्स का उन्होंने उनको क्रेडिट नहीं दिया बाय सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देम. बट एनीवे, दैट असाइड, मैं यहाँ पे नेगेटिव बातें करने नहीं आया हूँ. आई वांट टू टॉक अबाउट पॉजिटिव things and today. But major the I think the approach of younger actors is changing. आज वो conventional heroes जिसे कहते हैं, या पंजाब का गबरू जवान हट्टा कट्टा 6 फुट का, you know, tall, handsome, good looking, fair, all that has changed. The kind of shows that we are seeing on OTT, I just seen so many I mean, I keep seeing new content because the actors which I see in them really inspire me, and all of them are playing really true to life characters. There is nothing which where you can feel that any of them is actually trying to perform. They're just being themselves, you know. So I think the trends are changing. I think a lot of people are now accepting that you don't need to be a lead player to be standing out. You just need to be part of a team and do your bit as well as you can. लाइक अब आज आजकल क्रिकेट का आईपीएल का टाइम है, तो अब आईपीएल में हर टीम में एक स्टार बैट्समैन होता है, मगर वो स्टार स्टार बैट्समैन अकेला तो उस टीम को नहीं जिता सकता है ना. तो उसमें एक छोटा सा फील्डर भी जो होगा, वो अगर एन मौके पर अगर अपोजिंग टीम को 5 रन की जरूरत है और वो कोई छक्का मारता है और ये उसको पकड़ लेता है फील्ड पे, बाउंड्री लाइन पे, तो वो बेचारा जो 11वां प्लेयर था, उसने जाके एक्चुअली टीम को जितवा दिया. तो every what I'm trying to say is कि in a story, whether it's a series or a film or anything, all characters matter in conveying a story, and it doesn't matter how long your screen time is. What matters is how much of an impact you left in that screen time that you got, right? And that's what matters, and Right. that's what will take you further ahead. uh, I remember seeing Sarfarosh of Amir Khan in 99, and there was a blink and miss cameo by Nawaz. Nawazuddin Siddiqui. But that cameo stayed with me because just the way he reacted to a bullet passing by his ear, just that reaction, just that split second reaction left a mark in me and say, "Yeah, this guy is a good actor, whoever he is." I didn't know who he was. It took me years to connect who it was. But that's what I'm talking about. It doesn't matter. The screen time doesn't matter. It's the impact you leave in a couple of seconds that matter. So, Absolutely, absolutely. Very well said. And tell me, what is the advice you give to young actors कि irrespective whether they come to Roshan Taneja School of Acting or not, जो young actors आपको भी कहीं पे मिलते होंगे, कहीं पे भटक गए पृथ्वी थिएटर पे over a coffee and they meet you, and what is the advice you give to them? so believe in yourself, you know,
First of all, it is extremely, extremely important to believe in yourself, and not believe in yourself with the arrogant with an arrogant standard, but be confident about yourself. आप यहाँ पे आए हैं, आपने जो हार्ड वर्क को एक्सेप्ट किया है कि इस इंडस्ट्री में मुझे जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़े अपनी एड़ियों को घिसना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप कर चुके हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत तो है जिसकी वजह से आप टिके हुए हैं अभी तक यहाँ। तो believe in yourself, because the more you believe in yourself, somebody or the other will have to believe in you, and that would happen. Yeah. So Very well said. Very well said. I'm so sorry, my network had played up, Rohit bhai. no, Extremely no sorry about problem, this. not at all. जी जी. आप थिएटर को कितना तवज्जो देते हैं? बिकॉज माय ऑब्जर्वेशन हैज बीन, जितने भी अच्छे कलाकार हैं, जितने भी सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, जितने भी बल्कि बड़े स्टार भी हैं, उनकी भी बात करूंगा मैं, उनको भी इंक्लूड करूंगा, इसमें शामिल करूंगा. They've all come from a theater background. You've seen Hollywood, be it Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino, you name anyone. You name हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, नसीर साहब, ओमपुरी जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, you just mentioned इरफान खान, के मेनन, मनोज बाजपेयी, जितने भी हैं, बल्कि कमर्शियल स्टार्स, let's talk about superstars. Ironically, both Shahrukh Khan and Amitabh Bachchan are both from an English theater background. So थिएटर को आप कितना तवज्जो देते हैं इन योर एक्टिंग स्कूल सर? देखिए, मैं ये सवाल का जवाब आप ही के चाचा जान के शब्दों में देना चाहूँगा, क्योंकि जब वो आए थे हमारे यहाँ पे तो हमारे स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा था, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि यही सवाल उनसे पूछा था, और ये पूछा था कि थिएटर एक्टिंग या फिल्म एक्टिंग में क्या फ़र्क है? तो ही सेज बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। उनका जवाब यही था। Whether you're truthful or it's not. या बस फ़र्क, अगर हल्का सा फ़र्क यह है कि in acting for camera you probably need to be a little more subtle, because the camera can come up close to you, whereas in theater the actor needs to reach out to the audience who could be at a distance, and therefore your voice could be a little louder than what should be, or your gestures would be a little more pronounced because you would need to illustrate what you're doing. However, we have positioned ourselves, not that I have anything, I respect theater actors a lot, but I think somewhere down the line, in the last few years, there's this uh, kind of thought process which has been spread around primarily by casting people who themselves have been, most of them have been failed actors who now have become casting directors, and Yes. and they of course came from theater background. So today they do this huge disservice to young aspirants, saying uh, actors needed, and then brackets mein likhte hain theater actors preferred, which I think is extremely, extremely unfair, for the simple reason I feel that acting for camera requires as much of effort and as much of study as acting on stage requires. In fact, to be able to cling on to an emotional continuity because of the very fact that you could be have done something in a master shot and a long shot, and you need to be repeating that in a close shot, which would probably be set up after a couple of hours, right? But to then come back to that emotional continuity and recreate that moment again requires a higher level of skill, be- for the simple reason that in a theater production or on stage, once you're on stage, it moves in a linear order. Your performance starts until the time you are on stage, or till the till such time that the play isn't over. You are moving around in a linear order, so it's a linear performance. Whereas in films, it's not a linear performance. You could actually start shooting a film
the last bit of the film to be shot earlier and the earlier bit to be shot later. But you still need to, when the audience sees it in the theater, the performance needs to look streamlined and linear, and for that an actor needs a equally high amount of skill level to be able to remember what how he or she had done what they had done in the earlier bits when they started, and what they need to be bringing to the screen or every time they face the camera for it to be looking in semblance to what the entire script or the story needs to be conveyed in. So I think there's an equal amount of weightage which should be given to both. Unfortunately, yes, the number of people who are skilled actors and are now also acting for camera are more who have come in from the theater background. But we must remember that it's actually acting for camera which has given them, all of them, the kind of name and fame that they have acquired. Acting on stage unfortunately didn't get them that same amount of name or fame, or even more importantly, the kind of financial security that they enjoy today. So acting for screen is in no measure an inferior or a lesser form. And we of course our course is compatible with both, for the simple reason that even though we train our students to be for acting for camera, but we shoot it in one take. So it's Right. like a stage performance. तो अगर आप एक टेक के दौरान बीच में फंबल करते हैं या कुछ मिस कर जाते हैं या कुछ भूल जाते हैं, तो देन वी कट एंड वी स्टार्ट अगेन. इट्स नॉट कि हाँ अब यहाँ से इतना किया, अब कट किया, यहाँ से आप आगे बढ़िए. नो, इट्स नॉट दैट. Hmm. They go back and they start again. So although they are acting for camera and they're getting trained for acting for camera, but they're doing it in one take. So they understand, if they have to do the same thing in theater and if they have to use the skill level in theater, it would help them over there as well. Gee, I'll share something very interesting with you. क्या हुआ कि अब since we are talking about stage actors, I came from a hardcore stage background. मैंने बहुत से plays कर रखे थे और auditions बहुत सारे दिए. ज़्यादातर मैं उनमें सब reject ही रहा सारे auditions में. I was a misfit in the character or something on the other didn't really work out. 2019 में unfortunately when the Fulama attacks took place on 14 February 2019, मैंने एक open letter लिखा to जैश ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट. और मैं दो वजह से खास ये लेटर लिखा मैंने. एक वजह थी कि आई हैड सर्व्ड इन जेएनके इन द वैली फॉर 2 years, तो वहां के गुरुवाद और वहां के क्षेत्र से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ था. दूसरी बात, मैंने कहा इफ मेजर मोहम्मद अली शाह डज नॉट राइट टू दीज क्लाउन, दीज जोकर्स, टू दीज जैश ए मोहम्मद कैरेक्टर, दोस एडवाइस बाय लॉट ऑफ पीपल कि मत लिखिए आप ये खत, क्यों आप ये रिस्क ले रहे हैं. सो आई कैन एक्सपेक्ट से रोहित तनेजा टू राइट टू देम. सो आई सेड कि भाई तुम जो कर रहे हो वो इस्लाम नहीं है, इस्लाम के बारे में हमसे बेहतर कौन समझाएगा इनको. एंड दैट लेटर बिकेम सो वायरल. टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट बिकेम सो वायरल कि मेरे को टेलीविजन पे इंटरव्यू देने पड़े इसके कि भाई मैं किस हिसाब से लिखा था. अब माइनर टैक्टिक्स तो मैं फौज की मैं इन माय शॉर्ट सर्विस कमीशन आई लर्नड. एंड अगेन यू टॉकिंग अबाउट कैमरा एंगल्स एंड कैमरा फेस करना, ये मैं अपने एज एन एक्टर फ्रॉम थिएटर एंड फ्रॉम कैमरा मैं थोड़ा बहुत सीख चुका था. तो जब स्टूडियो में व्हेन आई वुड स्पीक, आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल बिफोर द कैमरा and I would speak from my heart. They'll say. So when I spoke from my heart, somewhere it connected with the audience, and that is how overnight, suddenly, I became a defense analyst, so to say. हालांकि मैंने कभी कोई फौज में डिफेंस एनालिसिस नहीं किया था, मेरे को उसके बारे में मालूम ही था डिफेंस एनालिसिस होता क्या है. आई वुड जस्ट स्पीक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, and suddenly that is how overnight a new defense analyst in India was born, and suddenly they started introducing me as डिफेंस एक्सपर्ट. मैंने कहा भाई मैं कहीं का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट. भारी भरकम नाम मिलने लग गए. So I was like, okay, but I was happy that at least what I'm speaking, it's connecting with some people. और यही मामला हुआ with my TEDx talks, because मैं performer tha. I was not a storyteller, I was a story shower. I would make sure when I'm narrating something, I should play with their mind, with their imagination. I should make them see it and believe it and smell it and feel it and actually be there in that position. So that helped me as an actor as well. और मेरे को ये आप एक डाउट, मेरे को एक आंसर नहीं मिला. आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल मैं अपने आप से खोज में हूँ. तो जब मेरा एनएसडी में दाखिला नहीं हुआ 2 बार, तो मैं जब शॉर्ट सर्विस करने आया, मेरे जहन में था कि मिलिट्री फौज के ऊपर तो फिल्में बनेंगी, लाइक उरी,
शेर जी, शाह, जी। उस तरीके की। तो आई सेड मुझसे बेहतर कौन कर पाएगा वो रोल? विद ऑल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर सिद्धार्थ एंड विकी कौशल, आई थिंक विकी कौशल और मैंने एक प्ले किया था विद मॉटली विद नसीर साहब इन 2010 एनर्जी थिएटर फेस्टिवल में। I thought हमसे बेहतर कौन, because someone who's actually lived that life. Apart from Vishal Bhardwaj, no one else could really understand that. ऐसा क्यों होता है? Why do people not cast someone overall, मोटे मोटे तौर पे, someone who has lived that life? Tell me, an army officer would be the best army officer off screen, would be the best army officer on screen. So why is it that उनको prefer नहीं करते? अ, देखिए, आपकी आपका उदाहरण अगर लिया जाए तो आप तो दोनों तरफ रह चुके हैं, इसीलिए आप कैमरा पे भी जाते हैं तो इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आप उस दौर से गुज़रे हुए हैं, आप उसकी इंट्रिकेसीज़ को समझते हैं। बट ये तो फिर वही बात हुई कि अगर फ़िल्मों में किसी ने एक आर्मी ऑफ़िसर का रोल किया है और अच्छा खासा, विकी कौशल को क्यों नहीं हम कमीशन करके बॉर्डर पे भेज देते हैं और वो आर्मी ऑफ़िसर बन जाए वहाँ पे, एक्चुअल आर्मी ऑफ़िसर, आर्मी जॉइन करके वहाँ पे ऑफ़िसर बन जाए। मुझे नहीं लगता कि वो इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे अपना रोल निभा पाएँगे, अगर उसको उनको वाक़ई में आर्मी में डाल दिया जाए। सो दीज़ आर स्पेशलाइज़्ड थिंग्स, जहाँ तक मेरा मानना है। अ, to be able to expect an army officer of who's a excellent army officer to come and be excel even as an actor or be himself on screen, I think is not the cup of tea of everybody else. You are blessed, Major, that you can manage it. I don't see many people from the army being able to pull it across, pull off performances as being themselves also, rather than playing an army officer of another name, but just by being themselves also. The moment somebody comes in front of the camera, there is हिचकिचाहट होती है, अच्छे अच्छों की हिचकिचाहट होती है, पर अच्छे ढीले होते हैं, थोड़ी सी अंदर से बटरफ्लाइज यू नो दे कीप fluttering. So it's not a cup of tea of everybody else, and I'm not deliberately trying to portray it to be something which is out of reach of anybody. Of course, अगर आप मन लगा के उस चीज में, वाकई जैसे मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि मैं एक्टिंग के एक्टर बनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ, और ये मेरे जिंदगी का यही एक मकसद है, जब आप उस जुनून के साथ इस चीज को करेंगे, तो वो जुनून आपका कहीं ना कहीं आके वो जुनून आपका पे ऑफ करेगा, राइट? और आपको Right. भी उस जर्नी में जो उस जुनून वो जर्नी के दौरान वो जुनून आपका परखा जाएगा। ऊपर वाला आपको कदम कदम पे उस जुनून के बारे में आपको टेस्ट करेगा। आप सिर्फ ये बोल रहे हैं या आपका, डू यू मीन, आई मीन, आर यू वॉकिंग द टॉक और यू जस्ट टॉकिंग? So there are a lot of trials which happen in an actor's life where he or she is always tested. Do you really mean what you're saying, or it's just one of those fancies? And when you go through that grind and you pass through those trials and by fire, that's where the actor emerges out of you. Right, बिल्कुल बिल्कुल. And also, do you think it is very important for an actor to actually struggle in the sense कि all the romanticizing struggle we've heard कि मैं फुटपाथ पे सोया, मैंने चबे चबाए, मैं चने चबाए, मैं 4 दिन खाना नहीं खाया, I didn't have money for this, and or is it important to go through that kind of रगड़ा, or it's, if he's trained, if he knows his craft, and वो अलग बात है that he could be, I would say, privileged. I'll not say coming from a privileged family. He could be privileged enough that he didn't have to do that. हालांकि many actors I know who I have done that. जब मैं बम्बई आया था, I was staying in बोईसर 120 किलोमीटर है बम्बई, मेन बॉम्बे से. And if I'm watching a play at Prithvi Theatre at night and I'm missing my last local to go back to Boisar, either I go to a friend relative's place, but कितने बार आप खटखटा देंगे रात के 12 बजे दोस्तों के यहाँ पे या रिश्तेदारों के यहाँ पे. So I've spent nights at Mumbai Central at Dadar station, and I have experienced that. And मेरे को कोई दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं एक trained commando था, एक तो मैं ये बोलूंगा. So I have done that in my academy, in my army training days. I was a फौजी आदमी था, तो मेरे को कोई दिक्कत कहीं पे हुई नहीं. So, do you think it's important for an actor to experience that pain, or it's fine? I mean, if he hasn't experienced that pain. नो, आई डोंट थिंक ऐसी कोई सेट फॉर्मेट है कि आपको फुटपाथ पे सोना चाहिए और भूखे रहना चाहिए तभी आप एक्टर बनेंगे, बिल्कुल नहीं. आई थिंक एवरी एक्टर हैज देयर ओन पाथ, ओन जर्नी,
एंड ऐसे कई एक्टर्स हैं, हम आज के भी थोड़े सक्सेसफुल एक्टर्स में से, यंगर लॉट में से देखें तो रणबीर कपूर हैजंट हैड टू स्ट्रगल. आई मीन ही वाज बोर्न विद द सिल्वर स्पून, बट दैट डजंट मेक हिम अ लेसर एक्टर. उनकी स्ट्रगल अलग है. वो स्ट्रगल ये अलग ये है कि हमें सिर्फ अपने पिताजी के नाम या अपने सरनेम की वजह से ही ये काम नहीं मिला है. मैं ये वाकई करना चाहता हूँ और मैं वाकई अच्छा हूँ इस चीज़ में. और वो अच्छा होने के लिए आपको सिर्फ बोल के नहीं होता है, आपको करके दिखाना पड़ता है. और उन्होंने उन्होंने करके दिखाया है. तो ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने जितना स्ट्रगल शायद फाइनेंशियली उनको स्ट्रगल ना करनी पड़ी हो, भाई इमोशनली बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है. तो मुझे घई साहब, सुभाष घई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिंदगी में अगर आपको कलाकार बनना है, किसी भी तरीके का कलाकार, चाहे वो चित्रकार हो या शिल्पकार हो या कोई भी हो, यू नो एन आर्टिस्ट नीड्स टू बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग. Hmm. Has Hmm. to have that, has had to, should have gone through a feeling of being deprived, either deprived of love, deprived of money, or deprived of some other something which has left them feeling hungry. And that's enough for you to have lit a fire in your belly. And that fire is lit when you go through something which you have been deprived of. And that's when an artist emerges. So it doesn't need to be necessarily sleeping on footpaths and not having eaten for a couple of days. No, no, that's that. I mean, उस वो अगर करना होता तो बहुत से लोग जैसे आजकल उनको बना दिया कि जिम में जाके सिक्स पैक कर लो तो आप ऋतिक रोशन बन जाओगे या एक्टर बन जाओगे. वो नहीं हुआ ना. अगर वो एक मापदंड होता तो बहुत से लोग बाहर से आके मरीन ड्राइव पे जानबूझ के जाके लेटते, सोते वहां पे और 2-3 दिन तक भूखे रहते, ये सोच के कि अच्छा ये चीज हम कर लेंगे तो हम एक्टर बन जाएंगे. वो उसका कोई मापदंड नहीं है. दैट, लाइक आई सेड, इट्स अ जर्नी व्हिच एवरीबॉडी हैज अ यूनिक एंड अ डिफरेंट जर्नी. एंड इफ इट इज इन योर, इफ ऊपर वाला सोचता है कि आपको इस चीज ये चीज के काबिल हैं आप, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको वहां तक पहुंचाएगा. भले ही कभी कभी कुछ लोगों को लंबा दौर हो, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा रास्ता कठिन हो, मगर जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू बी एन एक्टर. पेशेंस, परसिवियरेंस आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. वो जब तक नहीं रहेंगे, ये दो चीज़ें हैं, लगे रहने की और डटे रहने की, ये जो दो चीज़ें हैं, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अब मुश्किल होगी. And also, I feel endurance. Correct me if I'm wrong. I feel it, because I think it's a very heartbreaking industry. आपको आज तारीख में कोई promise करेगा he'll show you the moon, and you will suddenly dream of stars in your eyes, and you will dream, and suddenly it all goes shattering down in the dustbin the very next day, and you'll be like, and not everyone can take that shock, but everyone can sustain it. ऐसा कई मर्तबा हुआ मेरे साथ भी कि बड़े बड़े सितारों के साथ आई हैव बिन कास्ट इन अ फिल्म, बट एंड आई हैव शॉट आल्सो, और मैंने शूटिंग भी करी है ना, एंड बहुत ही खुशी हो रही कि भाई अरे ईद के बाद रिलीज है, इसके बाद रिलीज है, वो माय सीन वाज टोटली चॉप्ड एंड आई एम नोवेयर देयर. हाँ, क्रेडिट्स में टू सेव माय नेम, जो डायरेक्टर ने हैज बीन काइंड इनफ, उन्होंने नाम लिख दिया मेरा कि भाई बताया होगा लोगों को, फेसबुक पे लगाया होगा, ट्विटर पे लगाया होगा कि मैं इस पिक्चर में आ रहा हूँ. तो इन द एंड नाम तो आया मेरा कम से कम. दैट वाज अ सेविंग ग्रेस. और एक बार ऐसा भी हुआ रोहित भाई, दैट आई एक्टेड इन अ फिल्म, बिग फिल्म, आई एम देयर विजिबल इन दिस फिल्म, बट क्रेडिट्स में ना स्पॉट बॉय के भी नाम आए, मेकअप मैन के नाम आए, ड्राइवर के नाम आए, मेरा नाम नहीं आया क्रेडिट पे. जी. So it is actually a very heartbreaking industry. And again, इट up, इज G. बिल्कुल So है. how do you advise those जी. youngsters that to hold strong? लाइक आई सेड, आई थिंक अगर जिंदगी में आपने, यू वांट somebody to believe in you, and thinking that yes, you are somebody whom they should invest their money and their time in, then you would have to believe in yourself first. It starts from there. And how would you be able to believe in yourself? when you are certain, it's like a very बहुत अच्छी कहावत है कि कॉन्फिडेंस ऐसी होनी चाहिए, एकदम अंडर गारमेंट्स की तरह होनी चाहिए. होते तो हैं मगर दिखते नहीं है, है ना. तो
तो बिलीफ भी वैसे ही होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा एक्सूट भी नहीं करना चाहिए, अपने आप को दिखावा भी नहीं करना चाहिए, बट एक यकीन है अपने अपने काबिलियत पे, एक यकीन है अपने काम पे, अपने हुनर पे, और वो यकीन आपको, बिलीव मी, वो यकीन ही आपको आगे लेके जाएगा। बिकॉज ये यकीन बहुत लोग तोड़ने की भी कोशिश करेंगे, कई तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे उस यकीन को। आपको कभी कभी पता भी नहीं चलेगा, और वो, क्योंकि आजकल इतने, लाइक देयर आर सो मेनी होपफुल्स फॉर अ रोल, दैट अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई दिस टैक्टिक्स, यार तू क्या कर लेगा यार, जा घर पे तू कर ले, यहाँ से तेरा कुछ होने नहीं वाला है। उससे धीरे धीरे दे वीडिंग आउट द कंपटीशन, द पर्सन हु सेइंग दैट टू एनीबॉडी इज एक्चुअली वीडिंग आउट हिज और हर ऑन कंपटीशन। सो जगह जगह, कदम कदम पर आपको लोग मिलेंगे जो शायद आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करें, बट आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी के अंदर वो, आप किसी को उतनी शक्ति ना दें कि आपके अंदर की इमारत को तोड़ सकें। आपकी इमारत इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए जो कहीं पे भी किसी भी झोंके से हिल जाए। सो इट्स लाइक दैट। Right. And I know very sweet of you to have given me so much of time, and you've been very very generous with your time. I know you are very very busy. But आपसे मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ that we spoke in the beginning about casting directors. अभी एक नया trend है casting directors का, and now I have seen very big actors, established actors, big names whose work we all know. उनको कॉल कर देते हैं हम कि ये मजा, उनको कॉल कर देते हैं, बोलते हैं सर आपको ऑडिशन के बुलाया है, इफ यू कैन कम एन ऑडिशन फॉर अस। सो आई somehow feel not required. I mean, अगर आप एक काम से वाकिफ हैं, you know the delivery, you know the capability of what this actor can do, what's the need to audition? I mean, that's my take. I don't, please throw some light on this, whatever you feel on this, Rohit bhai. I think if you have to look at it in a democratic way, I think it's a very democratic way of sourcing actors. However, they should be keep in mind the body of work of an actor who has done work before, and if they are actually considering to cast him or her, they should keep in mind and consider the kind of body of work they have done, and more importantly उसको just to soften the blow, वो एक established actor के लिए उसको audition नहीं कहते हैं, उनको look test कहते हैं, है ना। तो लुक टेस्ट से वो ये छुपा देते हैं कि जी आपको हम परख नहीं रहे हैं, हम ये सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे कैरेक्टर को का दिखने का एक तरीका, एक सर्टन तरीके का दिखता है वो, तो क्या आप उस चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं। तो वो एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स को वो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको बुलाते हैं, उनको ऑडिशन नहीं कहते हैं, उनको लुक टेस्ट कहते हैं, बट दोनों का मतलब वही है। बट आई थिंक आज हॉलीवुड में भी यही होता है, हॉलीवुड में भी आज भी एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स को ऑडिशन देने पड़ते हैं, दे नीड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। सो व्हाई नॉट ओवर हियर? आई थिंक I don't think that should be looked at in in any different way. It's a democratic process. I think they should be able to. Somebody, like I said, an established actor would probably might not feel so nice about it, but eventually, if the role is really exciting him or her, I don't think they would mind doing it. राइट राइट, वेरी वेल आंसर्ड एंड वेरी वेल क्लियर दैट। आपने वो डाउट बहुत क्लियर कर दिया आपने हॉलीवुड का एग्जांपल देके। दैट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग एंड थैंक यू वेरी मच रोहित भाई। इट्स बीन सच अ प्लेजर, सच अ डिलाइट बीइंग इन कन्वर्सेशन विद यू। आपने इतने फंडे क्लियर कर दिए मेरे भी, और हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं और देख रहे होंगे आगे और जो देखने वाले हैं। सो काइंड ऑफ यू। प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू सर। जय हिंद रोहित भाई। Thank you, Major. It's wonderful. पता ही नहीं चला कि एक घंटा कैसे बीत गया. Thank you very much for inviting me, and it was a pleasure. Yeah. Thank you very much, Rohit bhai. Just going off air in 5 seconds. Just stay on.